is Khan. Hope everybody's doing good and everybody's doing fine. And today we are here on the day 13 of the 21-day learning SQL challenge. And over the time we have learned a lot of new things, especially regarding the CTEs. And with that use of CTEs, we have also learned the most important and the vital SQL organs which are in practice, which are a common practice and which are part of the dashboards. So before we move forward, let me give you a quick review of what we did yesterday in day 12. And day 12 was all about cohort and retention, and I learned a lot about cohort yesterday, and I managed to solve the main question. And after that, ChatGPT allowed me to do some minor questions, because the main question, the important question which I did was that I found out what is a cohort and how to work on the cohort logic, how to find the cohort, and so on. And today our target was to work on the what real cohort analyst built. Okay, so this is the retention metrics which we should be discussing today, hopefully. And for this cohort table to be built, I already built the 90% of logic on day 12, and today I am hoping to build a real retention metrics question. And yeah, let's see where the ChatGPT takes us today for day 13. So I gave him the cue, which is that day 13 is on. So now let's get right into it. Question 1. And ChatGPT says, love the energy, day 13 is on. And yes, we will keep it pure business scenarios, just like real analyst would face. Yeah, the problem was that in day 12, after the first question, he started asking me some random questions like find this, that, without giving me a business scenario. And I've already told him, if you have watched the other videos, you know that the pattern we are following is that we are getting we will be getting some business scenario questions, and based on those business scenario questions, he asked the questions. And because once you understand the business scenario, you are able to comprehend the concept into your mind once you fully understand it or fully grasp it. Okay, so in day 12 it was missing, so I just make sure that to let him know, to remind him that you have to ask me in the business scenario style, okay, like a real analyst would face. Today we move from cohort logic to retention measurement. Okay, so yesterday we learned cohort logic, and if you have watched the previous videos for day 12, you will understand what is a cohort is. And just for this video, let me tell you that cohort means cohort is when you classify a certain action into a group, and then based on that you kind of control your kind of make learn kind of measure your KPI or retention measurement based on that cohort. So cohort also means that when is the first time a person has purchased from you, and when is the next time he has purchased from you. So these are the cohort logics, if in simple words I can say that. So that means that if a person has bought something from you in 2022, that is his first cohort year. Okay, this is his first purchase from you. Now everybody who buys in 2022 for the first time from you, they are your cohort for that year. Okay, and then based on those cohorts you try to measure the retention of the customers, and that is quite important. So moving to day 13, and let's look at the business scenario 1, shall we. A product manager wants to understand customer retention. Okay, this is routine, and she asks, for each cohort year, how many customers returned in the same year as their first purchase. Okay, in other words, find each customer's first purchase year, which is the cohort year, which we have already done yesterday, and count how many customers made at least one purchase in that same year. Okay, so what is happening here, that it is the business question. The business scenario is that a product manager of a company, he wants to understand, she wants to understand the customer retention.
So she asked that for each cohort year. So cohort year means that when is the first time that customer has done his first purchase from you, that is his cohort year. So she's saying that, for example, if a customer A has his cohort year is 2022, I have to find out that whether that customer A bought came back and bought another thing from us in the same year or not, in the same year for his cohort year. So we have to find out that whether the customer returned for the same year or not for the cohort year. Okay, and I think so that makes the question quite clear. And in other words, find each customer's first purchase year, which is the cohort year, and count how many customers made it. We found it yesterday, and we have to find out that how many customers made at least one purchase in that same year other than being cohort. That means two purchases. Okay, so the business question, a query that returns. So for the business question, the query should look like this: cohort return customers in cohort 150, 180. Where cohort year first purchase year, customers in cohort, numbers of customers whose first purchase happened that year. How many one purchase that year? And how many one purchase that year? Business context. This, and also this is the query which we should return, and the business context is here. What does this question do? Main thing I wanted to understand that also. So this tells the company that how many new customers did we acquire each year, and this is very common KPI in dashboards. Interesting. So it's just a KPI for them. So the table you should use fact internet set customer key. This is the hint, and order date. Okay. Expected skill you should spread minimum year group by and CTEs. Okay. Hint: don't stop thinking. You have already wrote 80% of this query yesterday. I remember. Think about customer key minimum year order date. I have done it yesterday. Send the query one. Then I will give you question two, which is a harder business scenario. Okay, so we have got our question one. That means that we have to look back to day 12 and just look at our code again, and then we will be start writing this query here. So yeah, let's hit the query board, shall we? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद निसार खान है। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और आप सारे अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम डे 13 में हैं आपने 21 दिन के चैलेंज के। ठीक है, तो इसमें यह सीन था कि कल का अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, डे 12 में हमने क्या किया था। तो डे 12 में हमने बहुत ही नई चीज़ सीखी थी। हमने रिटेंशन के ऊपर काम किया था। रिटेंशन से भी ज़्यादा हमने जो काम किया था वो था कोहोर्ट के ऊपर। कोहोर्ट के ऊपर, कोहोर्ट क्या है आप पूछेंगे, तो कोहोर्ट ये होता है कि जब भी, क्योंकि ये रिटेंशन एनालिसिस की ना बेस है कोहोर्ट। कोहोर्ट का मतलब ये है कि भाई आपका जो भी कस्टमर आपके पास है उसने आपसे इनिशियल परचेज़ किस साल में किया है, और जब वो आपका जिस साल में उसकी पहली परचेज़ होती है वो उसका कोहोर्ट ईयर बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी जो रिटेंशन की एनालिसिस होती है ना, आप उस कोहोर्ट के मुताबिक आप करते हो। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में भी ये चीज़ें कॉमन है बिजनेस वर्ल्ड में। तो अब ये हुआ था कि कल हमने क्या किया था कि हमें पता नहीं चला, लेकिन फिर हमने बेस बना ली थी रिटेंशन एनालिसिस पाइपलाइन के लिए। तो कहता है फुल पाइपलाइन जो है वो इस तरह दिखता है। पहले स्टेप में हमने कोहोर्ट ईयर पता लगाना है, दूसरे में हमने परचेज ईयर का पता लगाना है, तीसरे में आपने उनको ज्वाइन करना है, क्या वो करना है, और एग्रीगेट रिटेंशन। हमने 4 स्टेप्स कल डे 4 में लबी ये है कि हमने कर दिए थे। और अगर आपने डे 4 की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये चारों चीज़ें सीखी थी, और कोड्स भी हमने सीखे थे, और अच्छा सा कोड हमने लिखा था। तो अब ये सीन होगा कि अब ये है कि यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 फॉर टुडे। ठीक है, मैंने कल वो कर दिया था, और बस एग्रीगेट रिटेंशन पे अब हम काम करेंगे। तो उसने मुझे कहा था कि भाई क्योंकि आप यहाँ पे आपने फाउंडेशन बना लिया है, क्योंकि इसमें हमने एक ही सवाल किया था मेजर क्वेश्चन, जो कि जिसके बाद से हमारा वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। और उसके बाद उसमें 2 छोटे छोटे रैंडम से क्वेश्चन, रैंडम से नहीं थे, मतलब टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे, लेकिन वो थोड़े से मतलब इस तरह था कि प्रैक्टिस के लिए, कि मतलब आप बस हिट कर लो इन्हें। तो वो भी मैंने कर दिए थे। तो वो उस पहली क्यूरी से ही वो सवालात बन रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह रियल लाइफ में भी इसी तरह होता है। आप एक दफ़ा मजबूत सी क्यूरी लिखते हो, बस उसमें थोड़ी मोटी चेंजेस करके आप अपना काम चलाते हो। ठीक है,
तो उसकी तरफ से रिव्यू मिले थे कि आपको थोड़ी सी समझ आना शुरू हो गई है, तो ये काफ़ी प्रोग्रेस था। ठीक है। तो अब ये था कि डे 13 के लिए उसने मुझे कहा था कि भाई हम आपको अब सिखाएंगे रियल कोहोर्ट टेबल जो कि एनालिस्ट बनाते हैं। ठीक है। तो ये हम इसको रिटेंशन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। हम ये आपको डे 13 में ये टास्क हम आपको देंगे। तो ये फिर हमने कहा कि बस अब चैट जीपीटी के हवाले है सारा कुछ। तो चैट जीपीटी अब हमारी हेल्प करेगा, वो ऑलरेडी जो कर रहा है। तो अब ये है कि हमने 90% जो लॉजिक था वो हमने डे 12 में अपना बना दिया था, अपने फाउंडेशन के ऊपर हमने काम कर लिया था। तो उसके बाद हम डे 13 में आ गए। हमने कहा चलो डे 13 आज आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो डे 13 में ये सीन था कि उसने मुझे कहा कि यार आपने जो बिज़नेस सिनेरियो के ऊपर ही थोड़ा सा मैंने उसको अपने कंसर्न्स रेज किए थे कि यार आप बिज़नेस सिनेरियो से हट के रैंडम से सवाल ना पूछो कि ये फाइंड करो वो फाइंड करो। अपने बिज़नेस सिनेरियो मुझे देना है ताकि मुझे पता चले कि भाई ये सवाल फिर मैं किस तरह बिज़नेस सिनेरियो में मुझे किस तरह पूछा जा सकता है ये सवाल, ताकि मेरी वो एनालिस्ट की जो पावर है थिंकिंग कैपेबिलिटी वो इम्प्रूव हो। ठीक है। अब वो कहते हैं कि यार आज हम मूव करेंगे कोहॉर्ट लॉजिक से रिटेंशन मेजरमेंट की तरफ। जो कल हमने कोहॉर्ट लॉजिक पढ़ा था उससे अब हम मूव करेंगे रिटेंशन मेजरमेंट की तरफ। तो कहते हैं डे 13 बिजनेस सिनेरियो 1। ठीक है। तो कहता है कि यार प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोडक्ट मैनेजर है, वो ये जानना चाहता है कि यार कस्टमर रिटेंशन को समझना चाहता है। रूटीन है वो जाओ कोई ऑब्वियसली आपका कोई गोल होता है उसके बाद आप वो सवाल पूछते हो। तो इसका गोल ये है कि भाई मैंने कस्टमर रिटेंशन को समझना है। ठीक है। तो वो जो है वो ये पूछती है कि फॉर हर कोहोर्ट ईयर के लिए कितने कस्टमर्स जो हैं वो वापस आए हैं हमारे पास उसी साल जिस साल उन्होंने पहली परचेज़ की थी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कस्टमर ने फॉर मिसाल के तौर पे ए कस्टमर है, एक एक हमारे पास कस्टमर है ए उसका नाम है। तो कस्टमर ने हमसे जो उसका कोहोर्ट ईयर बनता है, कोहोर्ट ईयर मतलब इनिशियल फर्स्ट परचेज हमारे से, तो वो बनता है 2022। तो अब ये पता करना चाहती है कि भाई वो 2022 में एक दफ़ा हमसे परचेज करके उसी साल दोबारा हमारे पास एक और परचेज के लिए आए, एक भी एटलीस्ट वन। ठीक है। मतलब उस एक इनिशियल परचेज के अलावा भी उसमें हमसे कोई परचेज के लिए दोबारा वापस आया है आई है जो भी। ठीक है। तो वो कहता है कि यार आसान अल्फाज में ये है कि पहला परचेज जो है, ठीक है, फर्स्ट ईयर परचेज जो कोहोर्ट ईयर है, तो इसे कहता है कि यार आप अपने इसमें फाइंड क्या करना है। ठीक है। चैट जीपीटी बीइंग द सुपरवाइजर उसने कहा कि यार आप सबसे पहले परचेज है कोहोर्ट ईयर, ये कोहोर्ट ईयर हमने कल भी फाइंड किया था। ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि यार आपने फिर काउंट करना है, काउंट, रिमेंबर काउंट। ठीक है। काउंट करना है कितने कस्टमर्स ने एटलीस्ट एक परचेज किया है उसी सेम साल में, एटलीस्ट एक, अदर देन द इनिशियल कोहॉर्ट। ठीक है। इनिशियल परचेज के अलावा उन्होंने एक एक्स्ट्रा या एटलीस्ट एक परचेज उसके अलावा जो किया है। ठीक है। कितने कस्टमर्स ने एटलीस्ट एक और परचेज किया है उसी साल। ठीक है। तो अब ये है कि बिज़नेस जो आपका सवाल है, जो क्यूरी आपकी हमें मिलनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए। ठीक है। क्रिएट अ क्यूरी दैट रिटर्न्स कोहोर्ट ईयर कस्टमर्स इन काउंट। कोहोर्ट ईयर 2011 12 13 150 180 2010 इस तरह आना चाहिए। कोहोर्ट ईयर का मतलब ये कि फर्स्ट परचेज ईयर, कस्टमर्स इन कोहोर्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स हुज फर्स्ट परचेज हैपन दैट ईयर। ठीक है। कस्टमर्स दे परचेज दैट ईयर। अब ये इस तरह का हमारे पास एक टेबल आना चाहिए। अब कहते हैं यार बिजनेस कंटेक्स्ट इसका क्या है इस सवाल का। देखो, कोई सवाल जो हमसे हम आपसे पूछ रहे हैं ये क्यों है, ये इस तरह है कि पता चल जाता है कि भाई हमने कितने नए कस्टमर्स एक्वायर किए हैं। ठीक है। कंपनी जो है वो जानना चाहती है कि भाई इसके नए कस्टमर्स हमने कितने एक्वायर किए हैं, इससे वो उनको अंदाज़ा हो जाता है। तो इधर यार बड़ा वेरी कॉमन है केपीआई में। ठीक है। केपीआई में डैशबोर्ड्स क्रिएशन में ये काफ़ी कॉमन है। तो उसका मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कस्टमर रिटेंशन। तो अब टेबल्स आपने क्या क्या यूज़ करने हैं। ठीक है। फैक्ट, इंटरनेट सेल्स, कस्टमर की ऑर्डर डेट, ये आपने यूज़ करने हैं। और क्योंकि हिंट्स तो वो दे रहा है तो मैंने उसको कहा भाई हिंट्स दो ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। एक्सपेक्टेड स्किल्स आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि मिनिमम ईयर ग्रुप बाय सीटीई। तो फिर उसके बाद वो कहता है एक और पावरफुल हिंट। अब वो ये है कि भाई मतलब सोचो, सवाल सोचो। ठीक है। इसके ऊपर सोचो। लेकिन ये है कि क्योंकि आपने ऑलरेडी 80% ये जो क्यूरी है ना ये आपने कल ही लिख दी थी। ठीक है। तो आप ये सोचो कि जो कस्टमर की और मिनिमम ईयर डेट पे आपने काम किया था तो वो भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। परेशान नहीं होना। तो ये अब ये सारा क्वेश्चन क्योंकि अब समझ आ गया है तो एक्सप्लेन भी हो गया, तो अब ये चलते हैं हम क्यूरी बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि क्यूरी बोर्ड में हम क्या कर सकते हैं। अबाउट द क्यूरी बोर्ड।
So, okay, friends, I have just written down the query. I have just written down the query here, and for question one, for business scenario one, you can say, and I think so. It was similar to what we have done yesterday, and especially with the cohort, it was same. To find the cohort here, this is the go-to formula, and then instead of the yearly activity which we have done in question in day 12, what I did was that I count the order date and customers in cohort because we wanted a specific number down here. Okay, so yeah, yesterday it was the years, but today I'm counting them. So this is the customer count, and the rest was, now I have to join them together in order to make this table cohort year and the customer count. And with that being said, everything is fine. There is no red line. That means there is nothing to worry about the syntax. Now all we have to do is run this query and see what kind of results we have. Okay, so we faced a problem here, and it is in line 8. Line 8. Fact internet sales customer key is invalid in the select list because it is not contained either in aggregate or. Okay, so let's just say group by customer key. Will that make sense? Yeah, okay, just troubleshooting here. Oh yeah, got it. Customer key. Okay, so customer key was missing here, and yeah, we have found our results. Customers in cohort 4, customer key cohort tier 12, 4 1, and we have gotten our result, and the query is doing fine, the query is doing good. Now obviously the result is fine, that doesn't mean that we have satisfied the business question, but anyways, we should share we should share the query with the ChatGPT, and let's see what our supervisor ChatGPT has to say. Over to ChatGPT. तो फ्रेंड्स, ये क्यूरी मैंने अभी आपके सामने लिख दी है, ठीक है। और ये जो कस्टमर कोहॉर्ट वाला था, इसमें एक चीज़ चैटजीपीटी ने मुझे बताई थी कि भाई कल जो आपने क्यूरी लिखी है ये वही क्यूरी है, बस आपने थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ आपने देखनी है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो आप क्या ऐड करोगे। तो कस्टमर कोहॉर्ट तो क्योंकि फार्मूला भी यही है, ठीक है, और इससे कस्टमर कोहॉर्ट ईयर का फार्मूला आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया ग्रुप बाय, और इससे अगर कस्टमर कोहॉर्ट तो मैंने बना दिया, पहले सी टी बन गया इसके साथ। दूसरे में है कि मैंने जो ईयरली एक्टिविटी कल हमने की थी, तो उसमें तो हमने बस ये पता करना था ना कि यार किस साल में वो एक्टिव रहे हैं और किस साल में वो दोबारा वापस आए हैं, हमने काउंट उनको नहीं किया था। तो इसमें बस ईयरली ईयरली एक्टिविटी की जगह मैंने इनको काउंट किया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ईयर लिखा था पिछले उस डे 12 में, उसको बस मैंने काउंट कर दिया है, ठीक है। और फिर बाकी वही चीज़ें थी, बाकी सब कुछ सिमिलर था, क्योंकि बस इसमें कस्टमर काउंट को चेंज करना था, तो उससे हमारे पास काउंट की वो लॉजिक आ जाती। तो बस मैंने उसको रन किया, तो रन किया तो अच्छा, तो रन किया तो इसमें आ गया कि यार जो कॉलम है फैक्ट इंटरनेट सेल्स कस्टमर की जो लाइन 8 है, अच्छा लाइन 8 मतलब ये, तो कहते हैं ये इनवैलिड है इन द लिस्ट, क्योंकि इसको ना कंटेन किया एग्रीगेट फंक्शन में और गुड बाय क्लॉज में। ओके, उसको हमने कंटेन करना है ग्रुप बाय। अच्छा, तो कंटेन करें ग्रुप बाय, चलो कस्टमर की कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, बस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट आ गया है। अच्छा, रिज़ल्ट आ गया है हमारे पास, ठीक है, कस्टमर की आया है, ठीक है। ये कोहोर्ट ईयर था, ये कस्टमर्स काउंट था, मैं कस्टमर की भी लेके आया हूँ, जो कि क्योंकि इधर सेलेक्ट हमने कर दिया था, सेलेक्ट कस्टमर की, इसको अगर ग्रुप बाई नहीं करते, अगर हम इसको ग्रुप बाई नहीं करते तो फिर
नहीं चले इसको, क्योंकि अब रिज़ल्ट आ गया है तो रिज़ल्ट को अभी ज़्यादा नहीं छेड़ते। इसको हम कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हज़रत हमारे लिए क्या क्या बोलते हैं, क्या फरमाते हैं चैट जीपीटी। अबाउट चैट जीपीटी। Okay, so we have shared our code with the ChatGPT, and ChatGPT has given his verdict, and ChatGPT said, "Nice attempt, thank you." Nice attempt. That means there is a problem. Okay. Well, obviously we are here for the learning purpose, and we are bound to make mistakes. Let's write it down. Anything which is important for us, and also try to make your notes with yourself. So it says that you are thinking in the right direction. Okay, but there are a couple of logical issues. Let's analyze it carefully like a real data analyst would. So if I'm thinking in the right direction, how come there are logical issues? Oh, well, ChatGPT is trying to be a nice supervisor, but okay, okay. So what does it say? It says that what you did correctly, you correctly created a cohort tier CTE. Yeah, I made it here, right? Minion. This correctly finds the first purchase year of each customer. That part is perfect. Okay, so this is a bingo thing. Now I think so. This is a universal formula for this. I think so. Min year to create for the to find a cohort year. Okay, so I've done it perfectly. Now the main logical problem. The business question was count how many customers belong to each cohort year. But your query is doing something different. Okay, so the business question was, yeah, the question was that how many customers belong to each cohort year. Okay, but your query is doing something different. What different? You created this CTE. Yeah, I created this CTE. Customer count is select customer key count order date as customer. Yes, there I think so. There's a problem. Right before going, let me tell you. I think so. There is. I should have selected the quantity. No, no, no. Or the sales line number or something. Order date was something different. Okay, this calculates number of orders per customer, but the business do not ask for order count. We only need number of customer per cohort here. Okay, number of customer. Okay, 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 okay. Before even moving forward, I think so I have found the problem. What I had done is that I had calculated the number of orders per customer for their cohort year, right? Instead what I should have done, that I should have count the customer key here, if you know what I mean. The customer key here should have been in count. Okay, no, 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 wait a minute. Let's see what ChatGPT has to say. Number of customers per cohort year. What should what the query should conceptually do? Step 1, find the cohort year per customer. Yeah, count customers per cohort, two customers together. Hint how to fix this query. Customer cohort, you've already created the correct CTE. Customer cohort. Okay, now just think, instead of joining another table, if what you would instead of joining another table, what if you simply do group by cohort here? Group by cohort here. Okay, small hint structure, think something like this. With customer cohort here, select cohort here, count customer key. Okay, from customer cohort. Okay, cohort here, select cohort here, comma, cohort here from where? There. Okay, so select customer cohort here. I told you customer key, man. Your mistake is not SQL syntax, your mistake is business interpretation. There seems to be a problem. I told you that I should have focused on the customer key, but the cohort here, it would have been different. Then I think so. Then I don't need the thing which I have done down here. I wouldn't be needing this. Okay, your mistake is not SQL syntax. Okay,
Your mistake is business interpretation. That is exactly skill you are training right now. You are struggling here, completely normal. Honestly, compared to the 8, you are much better now. Okay, I know. So let's continue business 2. Okay, so let's just review it once again. What changes I have to make? As I told you, the customer key was the problem here, and let's see what can we do with it. And customer count. Okay, everything is fine. Customer cohort is fine. What should, instead of customer key, I should do the cohort here. Cohort, cohort here. Count customer key. Count, not order key. Customer key. Customers in cohort uh, from from where, from customer cohorts, group by cohort year, group by cohort year. So I think that I should remove this one, and then I should remove this. I think there is no need for it. And this, okay. I think there is no need for customer count as, just select cohort year. Yeah, this is perfect. And I think so this is now perfect. Let's run this query now. Okay, so this is what should we have gotten and what we did. I think so this is a great learning. This is a great learning. So I misinterpret the question, and I already, before even moving to the customer key, I told you that I think so I felt that the customer key was the problem here. Anyways, this was a good learning, great learning. I had to find the customer key, I had to count it, and yeah, now we have the answers with us. And this is the simple result which you have to follow. Okay, with that being said, let's move to question 2. Shall we uh, चैट जीपीटी के साथ मैंने शेयर कर दिया था, तो चैट जीपीटी से देखते हैं चैट जीपीटी हजरत क्या बोलते हैं। चैट जीपीटी कह रहा है कि यार आप सही सोच रहे हो, ठीक है, आपको चीज़ समझ आ गई है, बट यहाँ पे लॉजिकल इशू है। अच्छा, तो अगर लॉजिकल इशू है तो फिर तुम्हें समझ किस तरह आई है? खैर चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। अच्छा, तो कहते हैं अभी हम क्या एनालाइज करेंगे किसी रियल डाटा एनालिस्ट की तरह, ठीक है, करते हैं चलो। वट डिड यू डू करेक्टली, आपने कौन सा काम ठीक किया? इस करेक्ट सी टी ई, मुझे लगता है ये कोई ना यूनिवर्सल फार्मूला है, ये तो मैंने ठीक किया है, ठीक है। और इससे ये हुआ कि पहले परचेज ईयर का पता चल गया, ठीक है। ये तो अब मुझे, मैं समझता हूँ कि इसको रट्टा भी मारना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। समझ आ गई है। हम अब इसमें ये कि मेन लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, वो ये था कि यार बिजनेस क्वेश्चन जो है वो ये था कि भाई आपने काउंट करने हैं कितने कस्टमर्स बिलोंग करते हैं हर कोर्ट ईयर पे, लेकिन आपकी क्यूरी कुछ और कर रही है। मैंने जो क्यूरी बनाई थी वो ये है, ठीक है। उसमें ऑर्डर डेट को काउंट कर रहा हूँ, तो इससे क्या कैलकुलेट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर। ओके, ठीक 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 ठीक। ये वो पिछले दिन से मैं डायरेक्ट उसको थोड़ा सा मैंने चेंजेस करके ना काउंट लगा के ऑर्डर डेट कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है पर कस्टमर, एक मिनट एक मिनट, मैं अभी से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे कस्टमर की लगाना चाहिए था, अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। हमें वी ओनली नीड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर कोहॉर्ट ईयर, ठीक है, हमें वो चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कस्टमर की ऑर्डर डेट की जगह लगाना है। फाइंड कस्टमर, पहला स्टेप क्या था कॉन्सेप्चुअली, कोहॉर्ट ईयर हर कस्टमर का, ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद ये कि हर कोहॉर्ट का आपका ये कोहॉर्ट के सामने कस्टमर के काउंट। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हिंट टू फिक्स योर क्यूरी, यू ऑलरेडी corrected the corrected CTE.
ठीक है, सिटीज़ सही बनाई है, कस्टमर कोहोर्ट में आपने कस्टमर कोहोर्ट आपने ठीक बनाया है, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग अनदर टेबल व्हाट इफ़ यू सिंपली डू कोहोर्ट हियर। अच्छा, मतलब ये पूरी साइंस लगाने की बजाय हम इसको अगर डायरेक्ट कोहोर्ट ईयर से ही ग्रुप बाय कर दें, हाँ, तो उससे भी तो काम हो सकता है, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा स्टेप मैंने किया है ना। और इसमें बस कस्टमर की को काउंट करना पड़ेगा और इसमें ग्रुप बाय को कोहोर्ट ईयर से करना पड़ेगा, दैट्स इट। अच्छा, स्मॉल हिंट स्ट्रक्चर थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस। ये कस्टमर कोहोर्ट तो ठीक है, बस इसमें सिर्फ सिंपली ये करना है, कस्टमर की देखो ना आ गया है यार। ठीक ठीक। तो ये कहता है कि यार सही बात बताऊँ, कहता है तुम्हारा स्किल सिंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं था, तुमने बिजनेस सवाल को समझा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कहता है इसी की स्किल के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें स्ट्रगल करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऑनेस्टली आप डे 8 से अभी आप काफ़ी समझदार हो गए हो, तो ठीक है यार, मतलब हम इसमें काफ़ी जो चेंजेस उसने बोली हैं वो हम करते हैं। तो चलते हैं चेंजेस करने। चले, ये तो पहले ख़त्म करो ना, ये देख के मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब ग्रुप बाय से ही, ग्रुप बाय इसको क्या करना है, इसको हम करते हैं कोहोर्ट ईयर से ग्रुप बाय, ठीक है। अब इसको फैक्ट इंटरनेट टेबल से नहीं, इसको कस्टमर कोहोर्ट से, कस्टमर कोहोर्ट से। अब काउंट ऑर्डर डेट नहीं, ये है कस्टमर की, ठीक है, कस्टमर की, अरे नहीं नहीं नहीं, कस्टमर, कस्टमर की। अब यहाँ पे जो ये जो कस्टमर की है ना, इसको लिखना है सेलेक्ट कोहोर्ट ईयर, ठीक है। इसको सेलेक्ट कोहोर्ट ईयर किया, अब यहाँ पे मुझे लगता है ये लगाना पड़ेगा। अब ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, नहीं ज़रूरत है। ये क्या आ रहा है यार, अच्छा इसको रन करते हैं अब। लाइन 12 में सिंटेक्स का मसला आ रहा है, लाइन 12 में सिंटेक्स का मसला आ रहा है, किस तरह, किस तरह मसला आ रहा है, कोहोर्ट ईयर। ये मुझे नहीं लगता चाहिए हमें, तो फिर ये आ रहा है। अच्छा ये नहीं चाहिए ना हमें यार, ये हमें नहीं चाहिए, कस्टमर कोड की फिर क्या ज़रूरत है, ये तो विंडोज़ में होगी है। हाँ, अब इसको रन करते हैं, बिंगो, रिज़ल्ट आ गया। काफ़ी लर्निंग हुई, अच्छा सवाल था। और चलते हैं अभी क्वेश्चन 2 की तरफ, लेट्स गो। Now let's continue with question 2. A real business scenario, the marketing team asks for each cohort year how many customers came back 1 year after the first 1 year after their first purchase. For each cohort year, how many customers came back 1 year after their first purchase? 1 year after their first purchase. Example output cohort year 2011, customers returned next year 85. Cohort year 2012, customers returned next year 92. Meaning, customer first purchase is 2011 and the customer purchased again in 2012. Okay, hint structure. You already know the pieces. Okay. So the question is asked from the marketing team. Marketing team wants to know that how many customers they return after their first year, after came back 1 year after their first purchase. Means they take time. They do not return in the same year, but 1 year after their initial purchase. For example, if the cohort year is 2011, uh, how many return in 2012? Okay, first purchase is 2011 and the customer purchased again in 2012. Okay, now the hint structure. Okay, the hint structure, you already know the pieces. Okay, you already know the pieces. Find cohort year. Okay, so cohort year after find, then find purchase year. Okay, purchase year, year date, join them and then filter purchase year cohort year plus 1. Okay, take your time, send it 13 query to this one is a real retention analyst built. Okay, I think so I have the pieces in my mind and I will be now hitting the query board to write the question 2.
question 2 for this real business sense. Okay, let's go. क्वेश्चन टू ये है कि यार उसमें क्वेश्चन टू में ये पूछ रहा है कि यार जो मार्केटिंग टीम है ना वो ये पता करना चाहती है कि यार हर कोहोर्ट ईयर के लिए, ठीक है, आपके जितने भी कोहोर्ट ईयर्स हैं उसके लिए आपने ये पता करना है कि कितने कस्टमर्स अपने पहले इनिशियल परचेज़ के बाद एक साल बाद, इनिशियल परचेज़ के एक साल बाद, उसी साल नहीं, एक साल बाद कितने कस्टमर्स वापस आते हैं, ठीक है। कस्टमर की पहले परचेज़ अगर 2011 में थी तो कस्टमर ने दोबारा 2012 में आपसे ख़रीदा है, कितने कस्टमर्स दोबारा 2012 में आपसे ख़रीदा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के लिए उसने कहा मैं आपको स्ट्रक्चर का हिंट दे देता हूँ। कोहॉर्ट ईयर में फाइंड करना है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। परचेज़ ईयर में फाइंड करना है, हाँ ये भी ईयर ऑडिटेड ये भी आता है। फिर हमने ज्वाइन करना है, ठीक है, वो जो ज्वाइन वाला हमने किया था। उसके बाद आपने बस आखिर में उनको फ़िल्टर लगाना है। और चलिए हम इसको करते हैं अभी, चलते हैं क्यूरी बोर्ड की तरफ और उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो।
So boys, I have just written down this query with me. So the query was I had to find that how many customers came back 1 year after their first purchase. Okay, so I had to target the cohort year and the customer return next year. Okay, so it was the question which I've already explained. So for that I have written this query. First I have found the cohort year with the customer cohort as my CTE. Then I have focused on the yearly activity which I declared as it as my purchase year. Okay, and after that then I have combined both yearly activity and customer cohort, and then I have applied this filter which was given to me by ChatGPT. Purchase year is equals to cohort year plus 1, and there are no red lines. That means there is no issue with the syntax, and we are in a position to run this query. Now let's run this query, shall we? Okay, so there is a problem here. Fact internet sales, order date, fact internet sales, order date in state line. Okay, fact internet sales, order date is invalid in the select because not contained either in group or group by clause. Okay, select. Okay, so how about, let's just say there is an issue here. Cohort, customer cohort. Okay, customer cohort. But then the order date seems to be having a problem. Order date. No, let's just do one thing. Fact internet sales. This is the customer key. Let's just select cohort year. No, there seems to be a problem here with this, and it is saying that fact internet order is invalid in the select list because is invalid is not either in aggregate function or a group by clause. Not aggregate in a group by clause. So what seems to be the issue here? And there seems to be a problem with the other one. Okay, so fact internet is invalid in the select. Okay, fact internet says it's invalid in the select because it is not contained either in an aggregate function or a group by clause. Okay, so let's just look at these. Question 1, earliest purchase, customer retention, repeat customers, first of and customer cohort here, and then here from fraction purchase at customer key order date. Okay, I think so there is no need to group it by which it was once done. Okay, let's run it. Yeah, so I have been adding an extra group by here. Okay, so purchase year to customer key is this, and the cohort is 2011. Okay, and I have received some results. There are no red lines, but as we all know one thing for sure, that a right answer doesn't mean that we have interpreted the business question. So before I have done it correctly. So yeah, now let's hit the ChatGPT and ask ChatGPT what ChatGPT has to say about this thing. तो वही ये क्यूरी मैंने लिख दी है जो ChatGPT ने कहा था। तो इसमें आपको पता है, सवाल आपको याद है कि हमने इसमें वो कस्टमर्स फाइंड करने हैं जो कोहॉर्ट ईयर के 1 साल बाद वापस आके हमसे उन्होंने कोई चीज़ ली है फ़ौरन बाद। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो कोहॉर्ट ईयर
हमने फाइंड करना था। ये एक यूनिवर्सल है, इसके लिए मिन ईयर ऑर्डर डेट लगाना है तो उससे आपका कोहॉर्ट ईयर आ जाता है, अर्लीस्ट परचेज आपको मिल जाता है। फिर हमने ग्रुप बाई किया कस्टमर की से, फिर ईयर एक्टिविटी पे हम गए और ईयर ऑर्डर डेट किया और परचेज ईयर पे हम आ गए। ठीक है, परचेज ईयर को हमने फाइंड किया कि इस साल इसने परचेज, ये साल है इसकी परचेज की। और फिर ये हुआ कि फिर हमने उसको ग्रुप बाई किया कस्टमर की के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनको ज्वाइन करना था, रूटीन है, ज्वाइन कर दिया। फिर कस्टमर कोहॉर्ट को ईयर एक्टिविटी पे ज्वाइन किया कस्टमर की के ज़रिए। उसके बाद सिर्फ एक फ़िल्टर एक्स्ट्रा लगाना था, फ़िल्टर जो कि चैट ने हमें बताया था कि ये वाला फ़िल्टर लगाना है, परचेज ईयर इज इक्वल्स टू कोहॉर्ट ईयर प्लस वन। ठीक है, कि एक साल के बाद वाला। तो ये मुझे समझ आया, ये मैंने लिखा, अभी तक मैंने इसको रन नहीं किया है तो अभी रन करके देखते हैं। रन करने, अच्छा, कोई रेड लाइन तो नहीं थी, लेकिन अब ये कह रहा है कि वो इफेक्ट इंटरनेट सेल में ऑर्डर डेट इनवैलिड है, सेलेक्ट लिस्ट में क्योंकि आपने इसको कंटेन नहीं किया एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप बाय क्लॉज में। ठीक है, तो इसमें क्या कस्टमर की में आपने कहा है कि कस्टमर को ग्रुप बाय नहीं किया, किया है नोट कंटेंट, इसमें हो गया, इसमें इसमें नहीं करना था, इसमें नहीं करना था, इसमें नहीं करना था। चलो इसको रन करते हैं। ओके, रिजल्ट आ गया। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि चैट जीपीटी इसके बारे में क्या कहता है। अब टू चैट जीपीटी नाउ। So I have pasted my query 2 into ChatGPT and let's see what ChatGPT has to say. ChatGPT says good progress. Okay, just good progress. I think so. There is something something wrong which I have done, but anyways, that is part of the learning. Good progress. This is very close to a correct retention analysis query. Okay, this is a retention analysis query. This is very close. Okay, you are clearly understanding the cohort and activity pattern, which is exactly the goal of the day 12 and 13. Yes, I am understanding it. Let's evaluate it critically and honestly, like a real data reviewer would. Yes, this is your job. Thank you. What you did correctly. Correct cohort definition. Okay, correct cohort definition. Year mean as cohort year perfectly identifies the first purchase year of each customer. Yeah, I think so. This is some kind of universal formula to find the cohort year, and I think so. It's good. It's good, and it kind of makes sense. And yeah, it's good. And I think so. The cohort is out of the equation now. Now we are focusing on the retention part. Correct activity table. Okay, correct activity table. Year order date as purchase year. This correctly captures uh, this correctly captures every year a purchase happened. Okay, so the correct activity table, I have done another thing which is purchase year order date as purchase year. Okay, then correct join logic. Yes, join customer cohort, the customer cohort on the early activity, this on this. Okay, this merges, what does it do, that it merges the cohort information with purchase activity, which is exactly how retention analysis work. Okay, for a retention analysis to work, you should merge your cohort information with the purchase activity, and that is how we understand how the retention analysis work. Okay, that's perfect. Now the next thing is correct retention condition. Okay, where purchase year is equal to cohort year plus 1. This correctly identifies customers who returned 1 year after their first purchase. Now this thing correctly identifies the customers who returned 1 year after their first purchase, which is a perfect logic. Now the only thing missing, the business question asks, the business question says that how many customers return next year per cohort. How many custom, okay, aggregate, I think so it's talking about some aggregate, but your query returns individual rows per customer. Yeah, individual rows. Okay, aggregate. Okay, but the business team wants something else. I told you there might be some problem with the business interpretation here at this point, so they wanted some aggregate here at this point, and I'm giving just individual rows per customer. Now the small hint to fix this aggregate problem is to group by cohort year. Okay, and count distinct customer key. Why distinct? Because customer might make multiple purchases in a year, obviously. Okay, this if you see this question, this answer, they have made some multiple purchases.
four purchases, so I need to work on the distinct also. Okay, so you might make multiple purchases in a year. Okay, so I learned the mistake. I have to group them by cohort year. Group them by cohort year. Okay, I have to group them by cohort year. Let's see. Just just for the sake of this activity, let's just group them by cohort. No, no, you cannot group them by cohort here. Okay, I have to group by cohort here, but where exactly I have to select cohort here? Customer key is needed here or not? No, it is just broken on the customer retained. Okay, so customer key is just simply here now, because the customer key is not here. Okay, customer key, group by customer key. Okay, just doing for the sake of understanding, group by customer key. Okay, now here what I would do is select cohort year. Okay, and not from the order date would be a problem. Okay, okay, no, no, just do it for the sake of this activity, shall we? Order date from customer cohort. Okay, I think that there seems to be a problem with this. And I think so the small hint to fix this was cohort year by distinct count. Where I have to use the count. Okay, it is saying that year. So it is doing some count here, aggregate. Purchase year, it is correct activity table. Purchase year already happened, but count distinct dis select distinct. Okay, there seems to be a problem. Aggregated insights, group by cohort year and by distinct customer key. Count. Okay, what seems to be the problem here? I think so. Select customer key. I think so. I have to perform on a single function here. Okay, Control X. Okay, just move about around here. Okay, this is fine. Now I think so. I have to
count it also. Okay, let's see, let's just start working on it. Aggregate. Okay, aggregate count, aggregate count, aggregate count is, yeah. Now select customer, select customer, select customer key, select customer key. Okay, select customer key. Okay, then count and distinct customer key, customer key as, select this, count a distinct customer key, count customer key as customer key. Sorry guys for the delay. There was some urgent work I had to take care of, and where were we? And we added a distinct count, and there seems to be a problem. I think so. Yeah, here we are not still able to aggregate group by cohort here, count distinct customer key, understand customer, but still we are not getting the aggregate here. तो अभी yearly activity ठीक है, yearly activity क्यों ना yearly activity को क्या करें, aggregate count I think so इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये मुझे फजूल लग रहा है, इसको हटाओ. ठीक है, अब yearly activity में क्या है, कस्टमर की को डिस्टिंक्ट कर देते हैं, select distinct customer key. अब यहाँ पे select ग्रुप बाय करना है ना, इसको डिस्टिंक्ट कर लिया, select customer cohort,
ईयर। ओके, अब मुझे लगता है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट। अब इसको क्या करना था, डिस्टिंक्ट यहाँ पर लिखा होगा और ओके डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ईयरली एक्टिविटी कस्टमर की एस कस्टमर एस कस्टमर रिटर्न कस्टमर रिटर्न नेक्स्ट ईयर। अब क्या करना है, ग्रुप बाय कोहॉर्ट ईयर। अब ग्रुप बाय कहाँ पर लिखूँ, ग्रुप बाय कहाँ पर लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ग्रुप बाय कोहॉर्ट ईयर ऑर्डर बाय फैंसी ऑर्डर बाय। ओके, यस यस यस। Well, it's done, and after incorporating the necessary hints, we have gotten our result, and the result is good. The result is good, awesome. And the few changes which I had to make was there was a problem with my aggregation here at this point. I was all my query was providing the results in row by row form, but I needed to aggregate them. So this was the same, but I here for the yearly activity, what I did was I did distinct. I said the select distinct customer key, okay, and then when I went down there, I selected the cohort year because I wanted to group them by cohort year. Obviously, I couldn't do it here, so I focused on doing it here, the cohort year. Okay, so I took the customer cohort year as the cohort year, and then I counted the customer key, distinct customer key, as customer as customer returned as customer returned next year from the yearly activity, which is this. And then I had just to do group by and order by. Order by was just fancy, but otherwise it's group by. So with that being said, we took care of the query, and now the query is fine. And now we can move to the last question for day 13, and with that and I would be saving it to my resource, and then we would be moving forward inshallah, hopefully. And hopefully we will move to final question for day 13, which is the core real analyst problem. So now let's go. तो यहाँ से जब इसने ChatGPT ने मुझे वो मशवरे दिए थे, तो मैंने काफ़ी चेंजेस अपने उस पुराने वाले कोड में किए थे, ठीक है। तो पुराने कोड वाले कोड में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपने जैसे देखा था कि मेरा जो भी आंसर आ रहा था ना, वो रो लेवल पे आ रहा था, जबकि मुझे चाहिए इस फॉर्म में, एग्रीगेट फॉर्म में। तो वो एग्रीगेट मेरे से हो नहीं रहा था, और अगर हो भी रहा था तो वो बार बार वो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी। तो उसने कहा था यार, एक तो हमें डिस्टिंक्ट पे काम करना है, ठीक है, काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर की, ठीक है। ये उसने बताया था कि भाई काउंट कस्टमर की ये आपने करना है। ये करने का मतलब ये है कि भाई कस्टमर रिटर्न को काउंट करने के लिए ये तरीका कार है उस्ताद, ठीक है।
तो फिर उसके बाद ये था कि कस्टमर कोहॉर्ट तो उसी तरह था, और इसमें सिर्फ मैंने उसको डिस्टिंक्ट कस्टमर की ये एक्टिविटी में बता दिया है। मैंने एक एक्टिविटी में उसको बताया कि यार अब मुझे सिर्फ कस्टमर, वही कस्टमर की चाहिए होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आके फिर हम इसमें जो कोहोर्ट ईयर को फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने जो ग्रुप बाय करना था उसने कहा है कि भाई आपने ग्रुप बाय करना है कोहोर्ट ईयर से, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको इस तरह इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। अब ये है कि परचेज ईयर पे फिर बार फिल्टर शीट चबा के, ठीक है, बस इधर क्योंकि मैंने कोहोर्ट ईयर यूज़ कर लिया है, तो फिर यहाँ पे आके मैंने आराम से कोहोर्ट ईयर ग्रुप बाय में उसको यूज़ कर लिया। अब क्योंकि फार्मूला ऐसे बता दिया था काउंट डिस्टिंग कस्टमर की का, तो बस उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और उसको मैंने कहा यार कस्टमर रिटर्न जो नेक्स्ट ईयर है ना उसका फार्मूला ये है। अब इसी के साथ हम इसको करते हैं रन और देखते हैं क्या सिचुएशन में, देखिए ठीक है, और अब इसका मतलब ये ठीक आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट्स फाइन है। और इसी के साथ ये सवाल भी हमारा हल हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको अपने नोटबुक में सेव करूँगा और उसके बाद हम चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रियल एनालिस्ट प्रॉब्लम। फाइनल क्वेश्चन है हमारा डे 13 का, तो चलते हैं डे 13 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो। Okay guys, so after pasting my code and the necessary learning into my notepad, we are here for the final question for day 13, which is also a real analyst problem. And this is very commonly asked in analytical interviews. Okay, now this is important. So the business question is, the product manager asks, for each cohort year, how many customers return 2 years after their first purchase? Okay, so this one is very commonly asked in analytical interview questions. Analytics interviews. Okay, business question, the product manager asks, for each cohort year, how many customers return 2 years after their first purchase? Okay, so this is a very commonly asked analytical questions. How, for each year, how many customers return 2 years after their first purchase? For each cohort year, how many customers returned 2 years after their first purchase? Very commonly asked question. Dear, how many customers returned 2 years after their first purchase? Cohort year, customer return after 2 years. Hint. So it is saying that for each cohort year, how many customers returned after 2 years? Okay. So what is the hint? Hint is that the condition is being changing from 1 to 2, and remember the aggregation step. And okay, wait a minute. So that means I just, for example, this code which I have, which I've already written here, copy, and if I go back and paste it into the terminal, because it is saying that I just have to do it like 2 years, 1945. Well, is that supposed to return like this? Because for each cohort year, how many customers return 2 years after their first purchase? What was question 2? What was question 2? Question 2 was something between the lines of uh, I think so. This was the business scenario 1. What was the business scenario 2? Business scenario for each quarter back of 1 year. So I just have to turn it to. Okay. So I think so. There was, I already everything. Just change the retention condition. So this was the retention condition. I have applied it, and it is already telling me. And remember the aggregation step. Copy. Let's just paste it here and see how it works, because I don't see there is nothing to change in this query, and it already says that I already have everything for this query. To be precise, I just have to add 1 plus convert 1 from 2, 1 to 2.
Okay, so I have just pasted it here to the ChatGPT, and let's see what ChatGPT has to say. Because if this works, good, this is a clean correct solution. Let's review it like a data team code review. Okay, so it is correct. Cohort, yeah, everything is correct. Distinct, yes. Customer retention, yes. The correct answer 2 years. Correct aggregation, yes. Correct cohort level. Proper business metric table. Your output becomes a proper business metric table, something like this is how we report a minor alias. Customer returned actually 2 years, after 2 years some good list. Okay, so one thing acquisition which matter would you calculate what this table we got, what is the correct idea 14 will begin, and that is where the product. So I think so the day 13 is over here, but I have let me, but the answer is this 1945 only for 2011. Okay, so just let me ask ChatGPT that for I am getting the result for just cohort year 2011, which is 1945. Okay, so just ask him now. So I have been asking ChatGPT, and there seems to be a problem only appears, which means some things is eliminating. Okay, good observation. Let's review like some analytical debugging situation. Yeah, I told you there is a problem with the result, but and only 2011, which means something of filtering logic. The problem where purchase is going to cohort here. This only shows cohorts where customer purchase exactly 2 years after they purchase. Now imagine the data timeline. 2011. Okay, this is the data. If your dataset contain only until 2013, then can return data to, but only to survive the filter. This is actually expected behavior, not an error. How analysts verify this? Run this quick diagnostic query. Select distinct year from fact internet and order by them by order date. Then your query results make perfect sense. How analysts double check cohorts? With customer cohorts, select minimum. This shows that how many customers belong to each cohort. Important analytical insight when you just encounter right censoring in cohort analysis. Okay, meaning that cohorts cannot be fully evaluated because enough time was passed yet. Very common in product analytics, sales and growth. Your interpretation, meaning that 1945% of the first purchase and returned again 21. This is actually real retention metrics. Quick analyst question, answer without SQL. If 10,000 customers joined in 2011 and 1941 returned after 2 years, what is the retention rate? Formula answer style is fine. So I think so it's correct. Should I just check it like he is saying, just to check? Well, I should check it. But it also can be the problem of right censoring. But I understand it. But the thing is that what he was expecting, what he was showing, that it might be something like this, because we had some data before for the question 1. We have some data, so how analyst verifies them? If the result is something like this, then your results makes perfect sense. Okay, so control X, select distinct year, order date from fact internet sales, order by year, order date. Okay, let's run it. Okay, so I have so I will ask ChatGPT, when I ran the diagnostic
when I ran the diagnostic, when I ran the diagnostic, which is this, when I ran the diagnostic, when I ran the diagnostic, which is this, I am getting these results. I am getting these results: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Is my query result still correct? Answer in one word, and then explain. Just making sure that the answer, the query which we have written has gotten the correct answer, because if that is not the case, then there's something wrong with the query. Well, I think so we got stuck here. No, since your dataset returned this means that the dataset does not contain enough years for multiple cohorts to satisfy the condition. Examples that should appear: expected purchase. So your output could contain at least 3 cohorts here. Your query return which indicates logical issues in the query, no data limitation. Yes, this is what I'm exactly talking about, the real problem. So yeah, what is the real problem? Let's discuss the real problem. Let's discuss the real problem. Okay, before we discuss the real problem, let's just copy it once more. Copy, and moving here, let's just paste. It was 2, and customer return 2 year. Okay, next 2 year. Yeah, this is fine. So when I'm running the QA, this is the result I'm getting. So your electricity CTE select distinct customer part is fine, but the filtering logic where it combined the join might be excluding valid cohorts depending on how the purchase exists for each customer. Yes, some cohorts may not have customers verifying the X2 condition, or join may be restricting. What should you verify next? If cohorts 2011 exist, then your previous query should not return only unless logic filtered them out. Key lesson important for whenever a cohort analysis return only one cohort, analyst always check available years in datasheet cohort distribution when whether filter condition is too strict. You correctly perform step 1, which is exactly how your senior analyst debug queries. Okay, so we are on the right path, we are learning it, so let's see how it goes. I'm just pasted it here. So if cohort 2011 2012 exists, then previously your query should not return only. Yeah, they exist. Yes, the 2010 2011 2012 exist. Yes, 2012 exist. I know I need to get into the bottom of this thing so that I can understand it once for all, and I think so it's not fixing. Okay, so confirm that is correct. Must filtering most cohorts out. Remain 3 messages remain. Your data is correct, but your query logic is filtering most cohorts out. Only 2011 appears cohort. Now the key point, you could count customer exactly out of it's very possible fewer are no customer purchased again in RFA, but actually so query is technically correct, but the data distribution produces only one correct error. In analytics this is normal. Sometimes the query is correct, but the business behavior produces limited results. Example, analyst might take customers from who had a stronger long-term retention, other may have churned out earlier. Quick sanity check, run this diagnostic. This will show how customers purchased in each channel, confirm certain cohorts transition exist. So that means technically our query is correct,
Technically our query is correct, so just no, no, not this one. No, 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 not this one. We have to copy this one. Okay, so paste. Let's just run it again. Yeah, it's again running. Honest evaluation of your work today. Your debugger approach was exactly what the related suspicious results. Check available errors, validate coherent existence, investigate filtering. This is proper analytical thinking. When you return for treating continuation, you will move to a more realistic metrics question that type in product and teams. Okay, so that means our question is correct. The 2011, which is so let me just ask him one final time, that whether this query which he has shared with me is correct. Give your final verdict based on all the give your final verdict based, because I just wanted to make sure that whatever I do here, it is correct and I understand it properly. Okay, so for this to work out, it is 2. Okay, and the customer key, as far as this is concerned, as customer return to year. Okay, just come down here, and I will be writing just now. Tell me your final verdict. Is your Tell me final is your query is my query for the question is correct or not. Don't give me useless diagnostics to run. Yes, just now tell me the final verdict, whether it is correct or not, so that I can move forward and copy or save the code with me. Let's see. What does he have to say? He's taking his time for correct logically for the question. Each customer distinct in logic. Yearly capture apply business cohort. Unique identify minor not another. Does not affect correctness. It's correct. Your query is actually valid and production grade for this task. Yes, so that means my query is correct. There is no problem with the query. So we would what would we do next? That we would be copying our query which was here. We would be copying our query to our notepad, and we would be writing the necessary things which we learned. And with that being said, I think so we completed our day 13, and today it was about retention and cohort analysis. It was a great day, it was a great learning experience, and hope you enjoyed watching it as much as I enjoyed doing it, performing it. And anyways, this is part of the learning. These hit and trial errors, these diagnostic checks and everything, they are part of learning. So I'm not worried, and I'm actually happy that I managed to satisfy myself by understanding the concept of cohort and retention analysis. Anyways, with that being said, I'm Mohammed Nisa Khan. If you enjoyed watching this video, don't forget to like, share and subscribe, and turn on the bell notification on so you do not miss any updates. And anyway, see you in day 14. Till then, take care of yourself. I'm Mohammed Nisa Khan signing out. Assalamu alaikum. तो वही सीन ये हुआ था ना कि इस सवाल में जो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा था, जो क्यूरी मैंने इसमें पेस्ट की थी ना, तो उसमें सिर्फ मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था वो 2011 आ रहा था, और सामने लिखा हुआ था 1945। तो उस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हुई। मैंने कहा यार देखो ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, आई एम गेटिंग रिज़ल्ट। मेरा ये जो क्यूरी थी, जो क्यूरी आपने देखी है, उस क्यूरी में मेरा रिज़ल्ट जो है वो 2011 आ रहा है और 1945 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं उससे पूछा कि यार आया ये सही भी है या गलत, ठीक है ना, कोई सीन भी हो सकता है, क्या सीन हो सकता है ना। मैंने कहा कि यार अब इसमें क्या मतलब मैं कर सकता हूँ, गेटिंग रिजल्ट्स आ रहा है, अब ये आ रहा था।
तो फिर मैंने इससे पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसने कहा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फ़िल्टर का कोई इशू हो, ये हो वो हो, और काफ़ी चीज़ें से मुझे बताई। और मैंने ये सारा कुछ रन किया, जो भी ये डायग्नोस्टिक मुझे बता रहा था, ये सारा कुछ मैंने देखा, चेक किया। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि यार इस तरह चीज़ें आ रही हैं। सब कुछ मैंने इसको बताया है, मतलब हर जो चीज़ रिकमेंड की वो सारा कुछ मैंने कर दिया, जस्ट कि यार मैं इस चीज़ को समझ सकूं कि आया प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आखिर में जब हमने चेक किया तो उसने कहा कि यार ये जो है 2010-11 जैसे ये एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसने कहा डेटा करेक्ट है, फिल्टरिंग लॉजिक में फिल्टर जो क्यूरी की लॉजिक है वो फिल्टर कर रहा है मोस्ट कोहॉर्ट्स को बाहर। तो मैंने कहा क्यों कर रहा है, तो उसने बस एक टेक्निकल जस्टिफिकेशन दी कि भाई वहाँ पे कोई डेटा का इशू हो सकता है, या उनकी दो तीन चीज़ है ना। बाकी सारा कुछ मैंने इस पर कर दिया। ठीक है। इनको चेक किया दोबारा, मैंने कहा यार आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दो। आखिर में सब कुछ डायग्नोस्टिक रन कर दिया, सब कुछ चेक किया, मैंने कहा फाइनल मुझे बताओ कि आया जो क्यूरी मैंने लिखी थी वो ठीक थी या गलत। तो उसने कहा भाई तुम्हारी क्यूरी ठीक थी। ठीक है। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये ये कोई इस तरह लॉजिक का, मतलब इसमें लॉजिक का कोई मसला नहीं है, इसमें ये नहीं कि कोई रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो इससे ये होता है कि दिस डज नॉट इफेक्ट द करेक्टनेस। तो इसमें क्यूरी क्या है, एनालिटिकली वैलिड है और प्रोडक्शन ग्रेड है इस टास्क के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन 3 भी सही से हो गया। तो इसी के साथ क्योंकि वो क्वेश्चन 3 भी हो गया, अब मैं इस तरह करूँगा कि क्वेश्चन 3 के ज़्यादा सवाल जो भी लर्निंग है वो मेरे नोट पैड पर सेव कर लूँगा। और आज का जो दिन था वो रिटेंशन के ऊपर था, रिटेंशन और इसके ऊपर था, रिटेंशन और कोहॉर्ट एनालिसिस के ऊपर था। तो दोनों बड़े मज़े के टॉपिक्स हैं, मैंने इन्जॉय किया उनको करना, उनको प्रैक्टिस करना, और बड़े टेक्निकल टॉपिक्स थे। और ये चीज़ें इस तरह होंगी कि जब बार बार रेगुलर इसको मैं टच करता रहूँगा, इसके साथ टच में रहूँगा, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाएंगी और एक टाइम इस तरह आएगा कि मैं इसमें थोड़ा सा एक्सेल भी कर जाऊँ। और इसी के साथ मुझे जिस इजाज़त में हूँ आपका, तो आपका होस्ट मोहम्मद निसार ख़ान। अगर आपको ये वीडियो आखिर तक आपने देखा और आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद निसार ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। साइनिंग आउट।